So today we are taking some questions based on indefinite integrals. That's the previous year JEE question. In the year 2008 it was asked, I is the integral given to you, e to the power x dx upon e raised to power 4x plus e raised to power 2x plus 1. J is integral of e raised to power minus x upon e raised to power minus 4x plus e raised to power minus 2x plus 1 dx. J minus I, that was required, and in fact 4 options were given. J minus I find out करना था, 4 options are given. I have directly written the value of that, या उस इंटीग्रल को लिख दिया मैंने, उसका इंटीग्रल का रिजल्ट लिख दिया मैंने. J minus I, that's what we want to prove right now. So J minus I, when we take J minus I is ठीक है ना, ये e raised to power minus x, इसको अगर अपन चेंज करें, it is e raised to 1 by e raised to power x, e raised to power 4x. We'll be taking the LCM. Minus of e raised to power x dx J minus I, ठीक है ना. इसका LCM लिया अपन ने. If we take the LCM here, that is, बताइएगा जरा प्लीज, e raised to power 4x plus e raised to power 2x plus 1 upon e raised to power 2x, 1 upon e raised to power x. तो एक e raised to power x कैंसिल होगा, न्यूमरेटर में e to the power x. चेक करते आइएगा प्लीज. टेकन द एलसीएम हियर, e to the power 4x plus e to the power 2x plus 1 upon e raised to power 4x. Okay, it is not, it is going to be e raised to power 3x, because 1 upon division में e to the power 4x, इधर 1 upon e raised to power x, it is e to the power 3x. अभी आप लोग देखते हैं डिनोमिनेटर सेम बन गया इसका. अभी हमने फिलहाल बहुत बड़ा काम नहीं किया, वी जस्ट रिटर्न कि भाई e टू द पावर माइनस 4x माइनस 2x और माइनस x को रेसिप्रोकल लेके लिखा. सो j माइनस आई, दैट इज इक्वल्स टू, इट इज गोइंग टू बी e रेज़ टू पावर 3x माइनस e रेज़ टू पावर x, है ना. इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं. डिनोमिनेटर इज सेम, e रेज़ टू पावर 4x plus e raised to power 2x plus 1 e raised to power 3x minus e raised to power x. If I take e raised to power x common, it will become e raised to power x common आ रहा है, बचेगा क्या, it is e raised to power 2x minus 1 dx. अब तक हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, ठीक है ना. अब क्या सजेस्ट करते हैं आप? Now we should take e to the power x equals to t. The reason is कि e raised to power x का derivative e to the power x dx भी present है इधर पे. तो take e to the power x equals to t. E raised to power x equals to t. E raised to power x dx will become dt. That integral becomes t square minus 1 upon t raised to power 4 plus t square प्लस 1 dt. ठीक है, e raised to power x dx dt बन गया. e raised to power x को t लिया था. अब तक कोई बड़ा काम तो नहीं किया हमने, लेकिन अब क्वेश्चन बन गया, सॉल्व हो गया है. कैसे, हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन? ये किया है हमने, काफी सवाल अटेम्प्ट किए हैं. यस, एल्जेब्रिक ट्विंस टाइप के क्वेश्चंस जब हमने पढ़े थे, वो 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर और 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर. तो इट इज, ठीक सोच रहे हैं आप लोग. टेक टी स्क्वायर कॉमन, इट इज गोइंग टू बी 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर. हियर ऑल्सो टेक टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी. राइट, द अप्रोच मस्ट बी द, इन द न्यूमरेटर इट इज 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, सो वी शुड कीप t प्लस 1 बाई टी इक्वल्स टू u. अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉर्मल अप्रोच पे आ गए हम. t
t प्लस 1/t को हम रखेंगे u, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, दैट विल बी 1 माइनस 1/t स्क्वायर इक्वल्स टू du by dt. It will in fact become 1 minus 1/t square dt will become du upon t square plus 1/t square है, t plus 1/t, तो it is going to be t plus 1/t whole square u square a square plus b square plus 2, but here it is plus 1 minus 1. चेक कर लीजिए प्लीज. डायरेक्ट फॉर्मूला इज देयर, du अपॉन u स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला. 1/2 है ln mod x माइनस a अपॉन x प्लस a. सिंपल हो गया बिल्कुल, राइट. इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, यूजुअली इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के ऊपर क्वेश्चंस कम होते हैं, डी के ऊपर ज़्यादा हो जाते हैं या एप्लीकेशंस के ऊपर ज़्यादा सवाल होते हैं, बट मैनी टाइम्स डायरेक्ट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं. इट्स इजी वन. JEE Advanced 2012 question, integral of sec square x upon sec x plus 10x raised to power 9/2 dx. Again some 4 options are also there, I not given the options. इंटीग्रेट करना है इंडेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन. क्या सजेस्ट करते हो आप लोग? sec x 10x को t, बट 10x को t लोगे तो डिनोमिनेटर में दिक्कत में आ जाओगे आप. sec x इज देयर, पूरे sec x प्लस 10x को t रख के ट्राई करते हैं. इफ यू टेक 10x इक्वल्स टू t बिकॉज ऑफ 10 sec स्क्वायर x dx dt, तो हम यहाँ फंस जाएंगे, ये sec x दिक्कत देगा फिर उस केस में. तो इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव टेकन कंप्लीट sec x प्लस 10x इक्वल्स टू t. देखते हैं sec x प्लस 10x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x. It is going to be sec x 10x plus sec square x dx equals to dt, right? So it is sec x 10x plus sec square x dx dt, or you can say sec x, if I take sec x common, it is 10x प्लस sec x dx इक्वल टू dt. देखते हैं क्या कर सकते हैं. वन मोर पॉइंट इज देयर कि sec x प्लस 10x को अगर मैंने t लिया है, तो यूजिंग द फैक्ट sec स्क्वायर x माइनस 10x के, बड़ी अच्छे काम की बात है, sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x, हम जानते हैं कि sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वो हो जाएगा sec x माइनस 10x इंटू sec x प्लस 10x. सो आई कैन डेफिनेटली यूजिंग sec x प्लस 10x को मैं t लेके बैठा हूं, व्हाट कैन बी डन, वो सारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम. भी sec x प्लस 10x को t रखा, दैट इज अ डेरिवेटिव ऑफ दैट, फाइन, ठीक है. दूसरी बात हम ये भी जानते हैं कि sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. sec x प्लस 10x इंटू sec x माइनस 10x, भाई ये क्या होगा, sec x प्लस 10x इंटू sec x माइनस 10x. तो sec x प्लस 10x इज ऑलरेडी t, बढ़िया. आई कैन डेफिनेटली राइट sec x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 1/t. sec x माइनस 10x को मैं 1/t लिख सकता हूं. ठीक, अब मेरे पास काफी सारी इंफॉर्मेशन हो गई. sec x प्लस 10x अवेलेबल है, डेरिवेटिव ऑफ दैट इज अवेलेबल, sec x माइनस 10x इज इक्वल टू 1/t, राइट. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस sec x प्लस 10x t है और sec x माइनस 10x 1/t है. देखो एक मजेदार बात, अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे, जहां जो रिक्वायर्ड सब मिल जाएगा. अब आप जब दोनों को ऐड करोगे आप, तो 10x कैंसिल हो जाएगा, यू विल बी गेटिंग sec x, यू विल बी गेटिंग 2 sec x इज इक्वल टू t प्लस 1/t, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू कैन फाइंड आउट 10x. नाउ लुक फॉर क्या क्या कर सकते हो, कर लीजिए, बन जाना चाहिए, जरूर बन जाएगा. So now start putting the things there. sec x plus 10x को मैंने t रखा है, तो it becomes t raised to power 9/2. देखते हैं क्या क्या हो रहा है. That dx becomes
that dx is what? dx is actually dt upon sec x plus tan x, तो फिर से t बन जाएगा. that dx will be dt upon sec x into sec x plus tan x is t, right? न्यूमरेटर में देयर इज sec square x. बढ़िया. एक sec x भी कैंसिल हुआ. चेक करते जाइएगा. sec x को डेफिनेटली जब मैं t के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो एवरीथिंग मस्ट बी देयर इन टर्म्स ऑफ t. तो ठीक है, मेरे पास रास्ता है, कोई परेशानी नहीं है ना. इट बिकम्स t raised to power 9 by 2 plus t raised to power 1. That becomes what? t raised to power 9 by 2 plus 1, 11 by 2. sec x प्लस tan x t है, sec x माइनस tan x 1 by t है. दोनों को ऐड किया तो 2 sec x is equals to t plus 1 by t, right? तो sec x will be equals to t plus 1 by t divide by 2. It's done now. हो गया. It is equals to 1 by 2 times t dt upon t raised to power 11 by 2 ठीक, प्लस 1 by 2 1 by t dt upon t raised to power 11 by 2. Simple integration is there. X raised to power n, integral of that is x raised to power n plus 1 upon n plus 1. खत्म. बहुत बड़ा काम नहीं किया हमने यहाँ पर. sec x plus tan x equals to t, that's the derivative of that, and we have used this sec square x minus tan square x equals to 1. Using that we have got sec x minus tan x is equals to 1 by t, और दोनों को ऐड करने पर we got the value of sec x in terms of t, और easily integrate हो गया. We take a question of JEE Mains 2014, but a good question. 1 plus x minus 1 by x into e raised to power x plus 1 by x dx. Integrate करना है, indefinite integrals. So 1 plus x minus 1 by x into e raised to power x plus 1 by x. जो एक आइडिया अपने दिमाग में आता है वो ये आता है कि भाई x plus 1 by x, so we should think about the derivative of x plus 1 by x. So x plus 1 by x का derivative 1 minus 1 by x square, बट डायरेक्टली वो प्रेजेंट नहीं दिख रहा अपने को, है ना. जो अपने को प्रेजेंट दिख रहा है दैट इज x minus 1 by x. जो हम जिस डायरेक्शन में सोचना चालू करते हैं भाई कि x plus 1 by x इक्वल्स टू x plus 1 by x को अगर हम t लेते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ दैट इज 1 minus 1 by x square dx इक्वल्स टू dt, बट वो है नहीं. जो अवेलेबल है दैट इज x minus 1 by x, लेकिन उससे बनाया जा सकता है. कुछ प्लान करते हैं, देखिए कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट करना होगा. 1 into x plus 1 by x, 1 into e raised to power x plus 1 by x dx, इसको सेपरेट किया. e raised to power x का इंटीग्रल आप जानते हैं, दैट्स फाइन, that is going to be e raised to power x, but what about e raised to power 1 by x? ठीक है ना. तो हमने क्या किया यहां पर, e raised to power x plus 1 by x प्लस x minus 1 by x, सेपरेट किया इसको, x minus 1 by x into e raised to power x plus 1 by x dx. ठीक, 1 के साथ में और x minus 1 by x के साथ में अलग अलग किया इसको. टारगेट तो अपना क्लियर था कि 1 minus 1 by x स्क्वायर डायरेक्टली नहीं अवेलेबल है, बट ठीक है देखा जाए. इसका भी फिलहाल इसको होल्ड पे रखते हैं, दैट इज e raised to power x plus 1 by x dx प्लस x minus 1 by x, थोड़ी सी कलाकारी, x कॉमन लिया, 1 minus 1 by x square e raised to power x plus 1 by x dx. ठीक, अब क्या करेंगे. हाँ, e to the power x plus 1 by x को t रखोगे तो ये x फंस जाएगा आपको. सोचो that x is also there. You should think about
कि आपको x प्लस 1/x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1/x स्क्वायर दिख रहा है, दैट्स फाइन. यू शुड थिंक अबाउट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड. तो हम ये इंटीग्रल हम कर पाएंगे वैसा. x प्लस 1/x को t रखेंगे, 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx विल बिकम dt. अदरवाइज आप पूरे में रखना चाहोगे तो दैट x विल क्रिएट अ प्रॉब्लम देयर. वी आर गोइंग टू अप्लाई बाय पार्ट्स हियर. वी आर ट्राइंग फॉर दैट. Keeping x as the first function and a 1 minus 1/x square into e raised to power x plus 1/x dx as that's the second function. क्योंकि इस सेकंड फंक्शन को मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा, इसलिए सेकंड फंक्शन लिया उसको. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. यस, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ 1 minus 1/x square e raised to power x plus 1/x dx plus whole integral of differentiation of the first function. When I say differentiation of the first function, तो x का derivative 1 into, again I write derivative of integral of let us see what happens here. ठीक, x प्लस 1/x इक्वल टू टी रखने वाला हूं मैं, राइट. x प्लस 1/x इक्वल टू टी. क्लियरली 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx इक्वल टू dt. आई एम गोइंग टू यूज दैट. इट इज एज इट इज e raised to power x plus 1/x dx प्लस x टाइम्स, ये x तो अपनी जगह, x प्लस 1/x इज t, दैट विल बी e raised to power t. इट इज एक्चुअली e raised to power t dt. e raised to power t का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू t इज गोइंग टू बी e raised to power t ओनली, विच इज नथिंग बट e raised to power x प्लस 1/x. चलिए उतना भी हुआ. व्हाट नेक्स्ट, इसका क्या किया जाए? सो अगेन क्या अगेन x प्लस 1/x, सॉरी फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस ऑफ, इट्स अ माइनस साइन देयर. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड minus of whole integral of derivative of first function into integral of the second function. Again the same situation, x plus 1/x को t, 1 minus 1/x square dx will become dt. ये बन जाएगा e raised to power t, e raised to power t का इंटीग्रल e raised to power t only, it is what, minus of, बड़ी मजेदार बात, ये तो वन है, ठीक है. what you are getting here, you are getting e raised to power x plus 1, अरे ये तो किया ही था ना, the same integral there, x plus 1/x dx plus constant of integration is always there whenever I am writing the indefinite integral. Please do take care, है ना. constant of integration तो हमेशा रहेगा, that is very well understood. और एक मजेदार बात हुई, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों इंटीग्रल्स कैंसिल हो जाएंगे. the result is x into e raised to power x plus 1/x plus c. In a JEE mains question for indefinite integrals, integral of 5 tan x upon tan x minus 2 dx is equals to x plus a times ln mod sin x minus 2 cos x plus constant. The requirement is about a की value find out करना है. Options are given in terms of a, ठीक है. Result is there in this form. बस इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम काम करने की कोशिश करेंगे. रिजल्ट जिस फॉर्म में x प्लस a टाइम्स ln mod sin x माइनस 2 cos x प्लस k. फर्स्ट ऑफ ऑल 5 tan x अपॉन tan x माइनस 2, जो पहली अप्रोच होना चाहिए, जो दिमाग में आती है और यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चंस में किया जाता है, साइन कॉस में कन्वर्ट करना. तो साइन कॉस में कन्वर्ट किया, इट इज 5 sin x, cos x कैंसिल होगा, sin x माइनस 2 cos x dx.
right? Here it is x. So after integration if it is coming as x, that means 1 is there. 1 का इंटीग्रेशन x बनेगा, मतलब टर्म कैंसिल होना चाहिए पूरी. भाई x कब आएगा? When 1 is there, 1 का इंटीग्रेशन x होगा ना. And ln mod sin x minus 2 cos x, हम तो रिजल्ट भी हमारे सामने, we can definitely take a idea from that also कि sin x minus 2 cos x को t रखने पर डेरिवेटिव ऑफ दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? cos x माइनस या cos x प्लस 2 sin x. पॉइंट इज अरेंज करना होगा कुल मिला के. इसको कैसे करें देखो जरा. 5 sin x कैन राइट इट लाइक sin x माइनस 2 cos x. देखते हैं जरा, एडजस्टमेंट करना होगा. sin x माइनस 2 cos x. बोले सर sin x 2 cos x तो है नहीं. नहीं है तो लाते हैं, है ना. प्लस 4 sin x, एंड वी कैन ट्राई इन द डायरेक्शन. तो 4 sin x प्लस 4 sin x प्लस 2 cos x. देखते हैं कहाँ कितना बनता है, ठीक है ना, और कहाँ अटकते हैं. नाउ कैन यू ट्राई फॉर दैट. इसको करने पे आएगा या कुछ और सोचा जाए? जस्ट थिंक ओवर दैट. सो बनना चाहिए. इट इज गोइंग टू बी, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में है. sin x माइनस 2 cos x हमने एडजस्ट ही उसके अकॉर्डिंग किया. sin x माइनस 2 cos x dx प्लस इट बिकम्स 1 and integration of that 1 will become x plus 4 sin x plus 2 cos x. Take 2 common. It is actually cos x plus 2 sin x. Right? So ठीक है यार, sin x का डेरिवेटिव cos x होगा और cos x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ sin x होगा. फाइन. sin x माइनस 2 cos x का डेरिवेटिव cos x plus 2 sin x होगा. It is going to be 1 integration of that 1 is x plus 2 times ln mod sin x minus 2 cos x plus constant of that integration. So value of a पूछा है, that value of a is nothing but 2. Say easy one relatively. बहुत सिंपल सा एडजस्टमेंट है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं. That's a previous year JEE question in the year 2007. It was asked fx is x upon 1 plus x raised to power n whole raised to power 1 by n for n greater than equals to 2, and gx is given as a composite function as f of x clearly for n number of times, है ना, that is f of n number of times x, and we have to evaluate the integral x raised to power n minus 2 gx dx. So first of all you will have to calculate gx, then only you can evaluate that integral. तो gx evaluate करना है, that is composite function f of n number of times. So one by one we try to evaluate. So we try to evaluate f of fx, है ना. f of fx find out करते हैं, which is nothing but you write like this. It is going to be in place of x I am going to keep fx whole raised to power 1 by n, right? Simple. So fx is what? That fx is x upon 1 plus x raised to power n whole raised to power 1 by n divided by 1 plus fx raised to power n. The fx raised to power n is what? This is x raised to power n divided by 1 by n whole raised to power n cancel हो जाएगा. It will be what? It is going to be 1 plus x raised to power n and whole raised to power 1 by n. ठीक है. In place of x I have kept fx. ठीक. Solve कर रहे हैं इसको हम, and we are going to get x upon 1 plus
twice of x raised to power n whole raised to power 1 by n. So it becomes 1 plus 2x raised to power n whole raised to power 1 by n. 1 plus x raised to power n whole raised to power 1 by n कैंसिल हो जाएगा. That is f of fx. अभी क्या करेंगे अपन? Try to calculate. समझना है तो f of fx है ना, ये f स्क्वायर x से डिनोट कर रहे हो तो इट इज गोइंग टू बी f क्यूब x. If I calculate f of right, एक काम भी कर सकते हैं कि ऑलरेडी f of fx हम निकाल के बैठे हैं, इसमें हम x को fx से रिप्लेस कर दें. ठीक है, f of fx तो ऑलरेडी है, उसमें अगेन x को fx से रिप्लेस कर दिया. इट इज fx upon 1 plus twice of fx raised to power n whole raised to power 1 by n. Right? Again put the value of fx there. fx की वैल्यू पुट कर दीजिए, that is x upon 1. Can you tell me by observation itself x upon 1 plus x raised to power n whole raised to power 1 by n जैसे इधर किया था, it is going to be what? सेम वैल्यू इधर पे रख दी आपने. Can you tell me what result you are going to get? It is going to be x upon, yes, here it was 1 times, तो ये 1 plus 1 2 हुआ, यहाँ पे 1 plus 2 it is going to be 3. Yes, करके देख सकते हैं. You are getting f cube x, that is this, and you want n number of times, so gx is n number of times, na, that is n times. So can you find out the value of gx? Gx क्या होगा? X upon 1 plus n times x raised to power n whole raised to power 1 by n, that is gx. Integral of x raised to power n minus 2 gx is ठीक है, x raised to power n minus 2 into gx, that is this gx. बोलिए क्या करने का अभी? ये बन जाएगा x raised to power n minus 2 into x, that is x raised to power n minus 1. हमारा काम तो हो गया. We are going to take 1 plus n into x raised to power n equals to t. Differentiation with respect to x is going to give you dx equals to dt. So x raised to power n minus 1 dx will become dt upon n square into this is t raised to power 1 by n, and you would be getting the integration of t raised to power minus 1 by n easily. कंपोजिट फंक्शन पहले सॉल्व करवाया उसने और फिर सिंपल इंटीग्रेशन इज देयर. इंटीग्रल इज वेरी सिंपल एज वेल एज कंपोजिट फंक्शन भी कहाँ दिक्कत है. अगेन प्रीवियस ईयर जेई एडवांस क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेफिनेट इंटीग्रल. लेट f be a real valued function on the interval minus 1 comma 1 with the condition that e to the power minus x fx is equals to 2 plus 0 to x integral of 0 to x root over t to the power 4 plus 1 dt. It is also given that f inverse is the inverse of f, that's fine. आपसे पूछा गया f inverse dash 2, that means derivative of inverse of that, derivative of inverse at x equals to 2, that's what is required. पूछा गया what is the value of that, some options are given, f inverse and dash derivative of that at x equals to 2. क्वेश्चन में जहां तक डेफिनेट इंटीग्रल का रोल है, दैट इज e to the power minus x fx equals to 2 plus 0 to x. Limits are function of x, and here it is a function of t with respect to t. You have to integrate. Leibniz rule of differentiation comes in the
माइंड फर्स्ट, वो तो अप्लाई करने का ही है. सो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. Using Leibniz, right? It is going to be e raised to power minus x, derivative of fx is going to be f dash x plus fx as it is, and derivative of e to the power minus x is minus of e to the power minus x is equals to 2 plus, sorry not 2, derivative of 2 will become 0 plus 0 to x, so it is going to be root over x raised to power 4 plus 1 into derivative of x 1. ये हो गया सिंपल डिफरेंशिएशन दैट इज देयर. ठीक. एफ इनवर्स एंड डेरिवेटिव ऑफ दैट एट एक्स इक्वल्स टू 2. अपन यहां पे एक और बात ऑब्जर्व कर लें. एट एक्स इक्वल्स टू 2 बोलता है. जो गिवन इक्वेशन है इसमें अगर आप देखते हैं, जो गिवन रिलेशन गिवन है उसमें अगर आप देखते हैं, इफ आई कीप एक्स इक्वल्स टू 0, व्हाट इज हैपनिंग देयर? दैट इज डिफाइंड फॉर -1 to 1, सो आई कैन कीप एक्स इक्वल्स टू 0 देयर. इफ आई कीप एक्स इक्वल्स टू 0, आई एम गोइंग टू गेट सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट. x इक्वल्स टू 0 रखता हूं, बोले सर इट विल बिकम 0 to 0, दैट विल बिकम 0. e raised to power 0 will become 1, and I am going to get f of 0 equals to 2. वैल्यू मुझे जरूरत लगेगी f of 0. f of 0 is coming as 2. ठीक है ना? I have kept x equals to 0 there. x equals to 0 I have kept there. So 0 to 0, that becomes 0. Complete, it will become 0. It is 2. And e raised to power 0 is 1, f of 0 equals to 2. So f of 0 is equals to 2. ठीक है. अच्छा, f इनवर्स एंड डेरिवेटिव, चलिए मैं आपको ये बता लें कि हम ये बहुत ठीक ढंग से जानते हैं कि f of f इनवर्स x as well as f inverse of fx is nothing but x. फंक्शंस में जानते हैं हम f inverse of fx is equals to f of f inverse x is equals to x. We are going to use that and it is required here ना. डिफरेंशिएट किया, मेरी रिक्वायरमेंट भी कुछ वैसी ही है. डिफरेंशिएशन यूजिंग कंपोजिट फंक्शन है ये, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? इट इज गोइंग टू बी, पहले एफ इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा. एफ इनवर्स ऑफ, यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन फर्स्ट. इफ इट इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में इट इज गोइंग टू बी एफ डैश जी ऑफ एक्स इनटू जी डैश एक्स. वही काम हुआ. तो पहले एफ इनवर्स का डेरिवेटिव एफ एक्स इनटू एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1, राइट. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपने को समझ में आने लगा है यहां पे, सुनिएगा. मेरी रिक्वायरमेंट है, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अस. और ये कब मिलेगा? f of 0 is coming as 2. If I keep x equals to 0, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं, if I keep x equals to 0, so I'll be getting f of 0. This f of 0 is nothing but 2. So it is into f dash 0 equals to 1. बोले सर इसका क्या करेंगे? f dash 0 is coming there. चलिए फाइन, that's the requirement of us. f dash 0 का क्या करना? Anybody any suggestion? f dash 0 कहां से लाएं? f of 0 तो मिल गया अपने को. This relation is going to help you.
कीप x इक्वल टू 0 हियर, x इक्वल टू 0 रखा है इसमें, e रेज टू पावर 0 दैट्स 1 into f of 0 that is 2 plus f of 0 is 2 f dash 0 is equals to x equals to 0 रखने पे it's 1 square root is 1, तो f dash 0 क्या होने वाला है, that is -2 नहीं, 1 minus 2 -1. हाँ कैलकुलेशन चेक कर लीजिए प्लीज. Okay, I have taken e raised to power minus x common, so it will become, okay, I have written fx, so it is minus fx. Yes, perfect, it is minus fx plus f dash x. Okay, so change there, -2 because I have taken e to the power minus x common. ठीक है, so it is -2 plus f dash 0 equals to 1. So f dash 0 is what, 1 plus 2, that's coming as 3. Yes, f dash 0 is 3, or f dash 0 3, that is f dash 0, that is 3. अच्छा सवाल है, 1/3, that is the result. Result we are getting, it is 1/3. यही एडवांस का सवाल है, ठीक क्वेश्चन.